Hello everyone, welcome to PTE 79 series Reorder Paragraphs. This is 6th video in the series, मतलब हम 5 reorders already cover कर चुके हैं and this is the 6th one. We try कि we almost on a daily basis आपके हम reorders cover करें because reorders and reading are very difficult. सबसे ज़्यादा students की request आती है कि सर हमारे reading में marks नहीं आ रहे हैं. Marvel PTE की strategy से, Marvel PTE की trick से उनके speaking में marks आ रहे हैं, writing में marks आ रहे हैं, listening में marks आ रहे हैं. Yes, 79 भी आते हैं बहुत सारों के 79 प्लस बट दे से कि सर हमारे रीडिंग में मार्क्स नहीं आ रहे हैं सो प्लीज कुछ करिए. सो वी हैव स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव इन द सजेस्टेड वीडियोस. आपको इसकी प्लेलिस्ट का यूआरएल मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी होगा. सो यू कैन वॉच अदर वीडियोस एंड फॉर द डिटेल एक्सप्लेनेशन you can watch the first video again. And before getting started, a lot of congratulations to the PTE students जिन्होंने अपना स्कोर अचीव किया है. नेहा शर्मा, रमनदीप, रोहित बांसल, and you can see their scores in the ticker. So without any delay, let's get started. So my name is Bhrat Brij. I have scored a perfect 90 in reading also. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं सर ग्रामर में भी 90, रीडिंग में भी 90, vocab में भी 90. सर कैसे हुआ? The thing is this, you have to follow the strategies, you have to follow the tricks and you will be able to get to your target score also. चाहे वो 79 है, 65 है या फिर you can also achieve 90 in reading but with practice and जो हम आपको tips and tricks समझाते हैं. So this is the scoring of the PT reading. बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि सिर्फ रीडिंग 90 मार्क्स की है. द आंसर इज नो. स्पीकिंग भी रीडिंग में कंट्रीब्यूट करती है, राइटिंग भी रीडिंग में कंट्रीब्यूट करती है एंड एज वेल एज लिसनिंग. नाउ द क्वेश्चन इज कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करता है या कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है. दो स्टूडेंट्स हु हैव जॉइंड आवर ऑनलाइन कोचिंग एंड इंस्टीट्यूट कोचिंग्स नोज द आंसर फॉर दिस कि कितने मार्क्स की कौन सा सेक्शन होता है. एंड कमिंग टू आवर रीऑर्डर स्ट्रेटजी, दैट इज वेरी सिंपल एंड विद इन 30 seconds, yes, you will be able to solve your answers within 30 seconds. You will be getting 100% marks. And as there is an integrated timer in reading, so आपको खुद time management करनी होती है. Reorders में the suggested time is 2 minutes. In 2 minutes you have to do the skimming of the text, then you have to read it, then you have to arrange it and then you have to confirm it. ये सब कुछ आपको 2 minutes में करना होता है. If you want to see the detailed video कैसे करना है, what is skimming, what is arranging, what is confirming, you can watch the first video of this playlist जहाँ पे everything is explained in detail. And assume that Marvel PT is the center of the reorder strategy. सबसे पहले हम आपको independent line ढूंढने के रूल्स बताते हैं. देन वेरी इंपॉर्टेंट BS स्ट्रैटेजी, देन इज आर CO स्ट्रैटेजी. कनेक्टर्स के यूजेज से कैसे आप अपने पेयरिंग्स कर सकते हो, TO रूल, AB रूल, SO स्ट्रैटेजी एंड देन द लास्ट सेंटेंस रूल. सो वी गिव यू 360 डिग्री सोल्यूशन और कंप्लीट सोल्यूशन फॉर रीऑर्डर्स. एंड वी हैव टू मोड्स. एग्जाम मोड आप तब वो ऑन मोड करोगे जब आपका एग्जाम नियर है, तो जो क्वेश्चंस प्रेडिक्टेड होते हैं यू विल सी इन दिस एग्जाम मोड. एंड देन द सेकंड वन इज टाइम मोड. टाइम मोड कौन सा मोड है? व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग इनिशियली आप टाइम मोड ऑफ करोगे एंड वंस यू हैव लर्नड आवर स्ट्रेटजीज एंड आर क्वाइट कंफर्टेबल विद इट, देन आप अपना टाइम मोड ऑन कर सकते हो. आपको 120 सेकंड्स मिलेंगे रीऑर्डर्स को अरेंज करने के लिए बिकॉज देन यू विल नो कि टाइम प्रेशर क्या होता है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करनी है, कैसे विद इन 120 सेकंड्स आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. एंड दिस इज टुडेज रीऑर्डर पैराग्राफ एंड आई एम गिविंग यू 30 सेकंड्स. इफ यू वांट आप फॉरवर्ड कर सकते हो वीडियो को 30 सेकंड्स और जस्ट हैव 30 seconds to skim this content and then we will discuss. Okay, I'm back. अब पिजन, यस, सबसे बड़ी बात इसमें प्रोनाउंसिएशन भी है, आपको इंप्रूव करनी है. दिस इज पिजन, नॉट पिडगिन. दिस इज पिजन. अ पिजन इज अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज दैट डेवलप फॉर सम प्रैक्टिकल पर्पस सच एज ट्रेडिंग अमंग ग्रुप ऑफ पीपल हु हैड अ लॉट ऑफ कॉन्टैक्ट बट हु डिडंट नो ईच अदर्स लैंग्वेजेस. सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि किसी लैंग्वेज की बात हो रही है, वैरायटी ऑफ लैंग्वेज की. ओके, इन सम एरियाज द स्टैंडर्ड चूजन में बी a variety that originally had no native speakers. तो आपको ये भी और इंडिपेंडेंट लग रही है, ये भी इंडिपेंडेंट लाइन लग रही है. दिस लैंग्वेज, अब अगर दिस लैंग्वेज यूज हो गया है तो ये इंडिपेंडेंट लाइन हो ही नहीं सकती है. एंड फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका फॉर एग्जाम्पल आ गया है तब भी आपकी इंडिपेंडेंट लाइन जनरली नहीं होती है. अ लॉट ऑफ बिजनेस इज कंडक्टेड इन टॉक पिसन. दिस इज talk pisin, this is pigeon, this is pisin.
Okay, always remember that. So now अब जो बात है, अब you have to find one independent line. But अगर आप हमारे टीओ के साथ से देखो तो यहाँ पे भी पिजन की बात हो रही है एंड यहाँ पे भी पिजन की बात हो रही है. अब आपका ये एक पेयर बनेगा. ओके, बट अगर आप यहाँ पे देखो, बिकॉज दिस इज अ पेयर्ड वन, दिस लैंग्वेज की बात हो रही है, सो यहाँ पे पिजन और इसका पेयर आपने सोच लिया. व्हाट यू कैन डू इज यू कैन आइदर पुट इट हियर, बट व्हाट वी डू इज वी स्टार्ट विद इंडिपेंडेंट लाइन. अब यहाँ पे देखिए, इन a lot of business is conducted in Tokpesin. Again, this is a language. यहाँ पे फिर से बात हो रही है. Tokpesin is another language. So अब यहाँ पे आपको ये लगेगा कि in some areas the standard chosen may be a variety that originally had no native speakers in the country. This is the independent line. What we are going to do is we are going to put this here and now we are going to make pairs. अब हम decide कर चुके हैं कि यहाँ पे अब आपने areas की बात कर रहे हो, area से related आप एक example दोगे, right? So what we are going to do is we are going to put over here because हम यहाँ पे बात कर रहे हैं Tokpesin की. उसके बाद आपको ये लैंग्वेज किसकी बात होगी यहाँ पे. अब यू हैव टू डिसाइड कि यहाँ पे दिस लैंग्वेज आएगा या पिजन वाली लाइन पहले आएगी. एज पर आर टीओ स्ट्रैटेजी, पहले आपका वो कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होगा, फिर वो एक्सप्लेन होगा. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज यहाँ पे हम वो कंसेप्ट को यूज कर रहे हैं. अब ये लास्ट लाइन है, वी हैड डिसाइडेड कि ये साथ में पेयर के साथ पेयर बनेगा. सो वी आर पुटिंग इट हियर एंड दिस इज द करेक्ट आंसर. सो इफ यू सी यूजिंग आर टीओ स्ट्रैटेजी वी कुड इजीली सॉल्व दिस reorder paragraph. So इसमें अब this language वाली बात है, हम किस लैंग्वेज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, टॉक पिजन की, एंड यहाँ पे पिजन की बात हो रही है. उसके बाद वो पिजन को डिफाइन किया गया है. So if you know our strategies it is easy to solve, else it can be difficult for you. And always remember you have 2 minutes. In 2 minutes what you have to do in first 30 to 60 seconds you have to skim the content, you have to find an independent line, you have to find conclusion, and जब जो लास्ट के 30 to 60 seconds रहते हैं you have to look for clues, you have to find pointers, years. And now we have seen, we have solved one question today on the basis of examples. And always remember this is a trophy which you have to win. Trophy is your target score. It may be 79, it may be 65, it may be 58 or 50. And if you are not following or modifying our strategies it will be difficult for you to score this, but if you are following it will be very easy for you. And always remember practice is the key. जितनी प्रैक्टिस करोगे, एक सही प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस करोगे, उतनी ही इंप्रूवमेंट होगी आप में. एंड दिस इज आवर व्हाट्सएप नंबर 8699121121. Me and my dedicated team is always there to help you. And do not forget to subscribe to our channel because we put video almost on a daily basis and we give wings to your dreams.